Hi there, welcome back to the Top Percentile YouTube channel. I'm Aditya Sridhar. I have scored a 99.99 percentile in the MBA CET. Our revision workshops is live for CET. The lecture started this weekend. It is still not too late to join. आप अभी भी join कर सकते हो. आपको previous lectures के recordings मिल जाएंगे. But all the revision is going to be according to CET 2026 paper pattern. एंड इस बार सीईटी का पैटर्न अक्रॉस द 5 स्लॉट्स काफी कंसिस्टेंट और प्रिडिक्टेबल थे. नॉर्मली स्टूडेंट्स को लगता है कि सीईटी इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बट दिस टाइम देयर वाज अ क्लियर पैटर्न. द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट. If we talk about VARC, easy to moderate with 4 RCs. LR was easy to moderate. It was a bit lengthy because puzzle sets नहीं थे, काफी ज्यादा traps थे in LR. Abstract was easy to moderate, and Quant DI में DI was 2 sets in all the slots, easy to moderate. The rest of Quant was also easy to moderate. Basically, high number of attempts का पेपर था, and इसीलिए we are going to assume, or it is a high chance rather, कि जो second attempt है May में उसका भी पैटर्न ऐसे ही आएगा. And that is how we've approached these revision workshops. And इसके लिए ही we have introduced 3 new mocks, which is as per the CET 2026 paper pattern. जो मैंने आपको पैटर्न बताया उसके अकॉर्डिंग रहेगा डिफिकल्टी वाइज. एंड this is going to be the best practice for you before you take the second attempt. ये देने के लिए आपको जाना पड़ेगा TTP के साइट पे. यू कैन गो टू बाय नाउ. उसके बाद आपको जाने हैं मॉक्स में, MBA FLTs, then you have to go to MHCT, and you can see that MHCT 01 2026 new pattern is already live, तो आप वो दे सकते हैं. इसके अलावा 2 और मॉक टेस्ट available होंगे on 18th April 10 p.m. So do give it. This is the closest mock that you will get to the CET 2026 pattern. And again, it is बहुत ही high probability है कि May का जो पेपर आएगा it will have the same pattern. So you should ensure कि आपने उसके लिए प्रैक्टिस किया है.